Some more breaking news that's coming in. The Congress is intensifying the fight for the Speaker post as the TMC goes against it. The Congress chief, Mallikarjun Kharge, has called for a meet of the INDI bloc MPs. There's going to be a key INDI bloc meet on the Speaker's post at 8 p.m. today. This is the latest when it comes to all the developments ahead of the Lok Sabha Speaker elections, which are taking place at 11 a.m. tomorrow. Remember, importantly, when it comes to what the opposition has done, and remember there is going to be a meet at 8 p.m. today in regards to the INDI bloc, essentially they have fielded their own candidate, which is something that they had earlier threatened in case they did not get the Deputy Speaker's post. Now, their candidate is K. Suresh. We're crossing over to my colleague Gaurav to get us more on this. Gaurav ji, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देखिए, आज इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर रात 8 बजे बुलाई है। और चूंकि अब विपक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो स्पीकर पोस्ट का चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि इतिहास में इस तरीके से पहली बार होने जा रहा है कि जब स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होगा, क्योंकि अब तक ये परंपरा रही है कि जो सरकार चुनी जाती है स्पीकर पोस्ट उसके पास जाता है और डेप्यूटी स्पीकर पद जो है अपोजिशन को दे दिया जाता है। लेकिन चूंकि 234 का नंबर ही अभी विपक्ष के पास है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की तरफ से ये कोशिश होगी कि क्या वो इस मुद्दे पर अन्य पार्टी opposition party. But BJP is not ready to give a deputy speaker post to opposition party. So yesterday, the BJP leader, deputy leader in Lok Sabha, Sri Rajnath Singh, contacted our Congress President, Shri Mallikarjun Kharge. In their conversation, Kharge ji told Mr. Rajnath Singh, we are ready to support in speaker election, but at the same time, you have to give a deputy speaker to opposition party. Then he said, okay, I will talk to leaders, and after that he will come back to Kharge ji. But today 10 o'clock, he told Kharge ji, 10 o'clock today, he will call Kharge ji and convey to the decision. But 10 o'clock he was not called Kharge ji. Then 11:30 we waited for their response, but unfortunately they are not calling us or meeting us. Then at 11:30, K.C. Venugopal and T.R. Balu met Amit Shah and Nadda ji and this Piyush Goyal. At that time, they asked the support of India Congress Party as well as the India Alliance. They told we are ready to support. At the same time, you have to give a categorical assurance for the Deputy Speaker post. But they are not ready to give any assurance. So we are compelled to file a nomination for the post of Speaker. But sir, the Union Minister Piyush Goyal is saying that it is the opposition who is doing politics because they had contacted the opposition parties. Even there were some talks which were also going on between the Treasury benches and the opposition. But they are not following the convention which is being there as on for the Speaker position. There is always a consensus which is being formed between the opposition and the ruling party. No, absolutely wrong. And Piyush Goyal always justifying their NDA wrong decisions. So, and also BJP wrong decisions. He always justify for the government and for the party. He is always doing like this. This time also, regarding the speaker election also, he is misleading the people. But everybody knows that why they are denying pro-time speaker. What is the justification denied to senior member? That also they justify. Now the speaker election, we waited for them. We waited for them till today, 12 o'clock is last time of the filing nomination. 11:30, till 11:30 we are waiting. We are waiting till 11:30. Then 11:30 only our leaders contacted them. That time they want to unconditional support to speaker post. So there is no unconditional support from our side because deputy speaker is our right. Now we are recognized opposition. But sir, what about the numbers? Because the opposition doesn't have the numbers. Any strategy being made for that, sir? No, a number is not an issue. So only thing is they have to broken the convention of the Lok Sabha. So the even selection of the pro-time speaker also they broken. Now deputy speaker post also they are not given any assurance to the opposition party. That's why we are. I told you, I am again repeating, I will compelled to contest. But sir, the TMC is not in favor of putting a candidate because they are saying that... TMC, I don't know, that our leadership will tell you.
I am not contacting with the TMC leaders. That our leaders, our party senior leaders will contact them. And Okay. Thank you so much, sir. So that was Mr. K. Suresh, who is the Congress Party's Lok Sabha MP, and he has filed his nomination for the Speaker position, as he said that it is the BJP who is not following the convention of the Parliament, and that's the only reason why the opposition was being forced to put up a candidate for the elections of the Speaker post. With video journalist Shashikant. Interestingly, again, that was an exclusive that Times Network had with K. Suresh. Remember, he is the INDI bloc's candidate when it comes to the Lok Sabha Speaker elections. But importantly, he did not make any remarks when it comes to the division within the bloc and the TMC not backing the fight for the Lok Sabha Speaker's post. But he did make two important remarks. One is that the Deputy Speaker position is our right of the INDI bloc. Two is that the NDA has broken the convention of the Lok Sabha. Now, remember, the Lok Sabha Speaker elections are slated for tomorrow at 11 a.m. The Speaker for the 17th Lok Sabha, Om Birla, has filed his nomination for the Lok Sabha Speaker post, and 8-time MP who you just heard, K. Suresh, has filed his nomination as the INDI bloc's candidate. Now, the opposition bloc had demanded that they be allowed to choose the Deputy Speaker position, and that if the demand isn't met, they would then field a candidate and force a contest for the Speaker's post, which is exactly what's taking place now. Now, Defence Minister Rajnath Singh had dialed leaders of the opposition bloc. Conversations were held with the Congress chief, Mallikarjun Kharge, urging for the Speaker to be decided by consensus. Currently, Bhartrihari Mehtab is the pro tem Speaker of the House until the elections are conducted tomorrow. वैसे जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वैसे जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खरगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खरगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खरगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खरगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। आपकी पार्टी का प्रतिपक्ष नेता कब चुना जाएगा? सब चुने जाएंगे। सर, कब तक हो जाएगा ये फैसला? ये आप चुनवाओगे? नहीं, आप लोग बहुत जल्दी समय आएगा। सर, स्पीकर के इलेक्शन पे पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और।
कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है।